Tell me something about yourself. So, thank you for providing me the opportunity to introduce myself. My name is Shivam Agarwal. I am from Ghaziabad. I am recently qualified my chartered accountant course. I have done my articleship from AG and Company. It's a mid-sized firm. It's having two parts. I have an experience in taxation and auditing. I have done income tax return and GST filing of corporate and non-corporate entities and done statutory audits and internal audits of the private limited company. It is all about me. Thank you. तुम्हारा कौन सा कंपनी है? Sir, PWC, EY and Genpact. What is the golden rule of accounting? Sir, golden rule of accounting is debit the receiver, credit the giver, debits what comes in, credit what goes out, all expenses are debited, all incomes are credits. What are your major audit observations in stat audit? Sir, in Saturday we have done the following observation that आपको एक ऑडियो इंप्रूव करना पड़ेगा शिवम, ठीक है? एक ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए. अभी तो नेट ही बंद हो गया आपका. ऑडियो मेरा नेट बंद हुआ कि आपका नेट बंद जैसे हो not well calculated properly. आपका इंटरनेट मेरा खराब था कि आपका पता नहीं, पर आपका ऑडियो क्वालिटी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? ऑडियो क्वालिटी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा खुद का, ठीक है? एक ना हेडफोन ले लीजिए आप, काम आएगा, ठीक है? डिलॉयट यूएसए में सब अप्लाई करिए, सब जगह. डिलॉयट यूएसए 19 तारीख को है, सब जगह अप्लाई करिए. कोई ना कोई का तो हो ही जाएगा ना, इसलिए सब अप्लाई करेगा तो कोई ना कोई तो होगा. प्रोबेबिलिटी है ना, 10 करेगा तो 1 का होगा. सर मैंने अप्लाई किया था वैसे ही मेरा रिजेक्ट हो गया. विशाल अडवाणी को दीजिए, कुछ ना कुछ करिए ऐसे करके, ठीक है? कुछ ना कुछ हो जाएगा. मैंने यहाँ पर ईमेल भी दिया है गार्गी अग्रवाल का, ट्राई करिए, ठीक है? व्हाट योर मेजर ऑडिट ऑब्जर्वेशन, क्या बोले आपने? एक बार फिर से बोलिएगा, इंटरनेट अनस्टेबल था, एक बार फिर से. Sir, we have done the following audit observations that fixed assets are overvalued, sales fake invoices are recorded in the books of account, depreciations are not calculated properly, and the books of account are not matched with GST returns, etc. Okay. What was the major observation in internal audit? So major. ओप्पो कौन है? ओप्पो वीवो ओप्पो. रात को कौन सी बोलिए, आप बोलिए. Sir, the major observation I look up that the entity are issuing fake invoices. They are issuing fake invoices without supplying goods and services in indirect taxation. पेपर रुक जाइए. ओप्पो कौन है? ओप्पो बोलिए, सबका नाम क्या है? ओप्पो ओप्पो A3 बताइए, कौन है आप ही है क्या? राघवेंद्र है क्या? ठीक है, चलिए. नहीं राघवेंद्र. ओप्पो पता नहीं कौन है भाई. रिमूव करेंगे फिर पता चलेगा हमको बाद में. नाम लेके आएगा, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है? वो कौन है? चैट बॉक्स में लिखा है क्या नाम? विजिता हो गया. नाम लिख के आएंगे सब जन, जो भी है, ठीक है? नेक्स्ट जो भी है, ठीक है? बोलिए. Sir, in internal audit observation, we have found that entity have issued fake invoicing without supplying jobs, goods and services. And also, I have recognized that in a related party transaction, entity has fraudulently taking ITC of the goods. What is P2P cycle? They are transferring ITC from one party to from one company to another in related party transactions. P2P that cycle. I have observed. P2P cycle. What is P2P cycle? Sir, B2B cycle, I don't know. You have done internal audit, right? Yes. What is P2P process? Don't know. B2B? P2P. Procure to pay. अच्छा, procure to pay. Sir, मैंने
पता नहीं है, थोड़ा गाइडेंस। In internal audit, what have you done? Sir, basically in internal audit, I have done the scrutiny of books of account of the party and fixed assets, verification of fixed assets, stock audit of books of account. Good. What is the difference between IFC testing and IFCR? Difference between IFC and IFCR. Sir, IFCR is a response internal control over financial reporting, and IFC is a basically is inclusion of IFCR, that is IFCR and fraud reporting observations. And fraud prevention control. And one more. IFC consists of IFCR, fraud prevention control, and और क्या होगा मुस्कान? And observation. IFC consists of IFCR, fraud prevention control. C से क्या होगा? नहीं पता. रितिका गुप्ता. ऑपरेशन कंट्रोल. ऑपरेशनल कंट्रोल. IFC में आपका IFCR होता है, फ्रॉड प्रिवेंशन कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल. IFCR इज अ पार्ट ऑफ IFC. ओके. स्टेट ऑडिटर क्या करता है? IFC करता है कि IFCR करता है? स्टेट ऑडिटर क्या करता है? IFCR करता है सर. IFCR अंडर सेक्शन 143(3). इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? IFC करता है कि IFCR करता है? सर IFC करता है इंटरनल ऑडिटर. IFCR नहीं करता वो. सर वो तो इंक्लूसिव है ना, IFCR IFC में IFCR करता है ना, तब तो करता है ना, वही बात है. इंक्लूसिव है तो करता है. हाँ. ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट दोनों करता है, याद रखना. स्टेट ऑडिटर व्हाट इट डज? IFCR. व्हाट इज IFCR, अर्चना? व्हाट इज IFCR? म्यूट में क्यों बात करते हो? So that I am not able to hear. IFC, internal financial control. What is it? What is IFCR? That I also know. कभी भी ना, if they ask you ना, अर्चना, what is IFCR, and you tell them the full form, then they will become, समझ रहे ना, फिर ये वो हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा वो तो पता ही है. What is IFCR actually? Interim Financial Control Reporting, right? Internal Control and Financial Reporting, correct? इनका नेट ही हो गया. हाँ बोलिए. इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? व्हाट इट इज. ठीक है, तो राशि आप बताओ क्या होता है? IFCR क्या होता है? किसको पता है यहाँ पर? में IFCR क्या होता है? बोलो. नहीं पता बोल दो. ICFR is checking operating effectiveness of controls. नहीं. IFCR क्या होता है? बोलिए तरुण, बोलिए. The internal control over financial reporting. In this, we have to check the accuracy of the financial transaction plus safeguarding of the assets. These two components are included in IFC OCR. Basically, your balance sheet, PL, cash flow statement, notes to account. These are the financial statement, right? Balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to account, correct? Now, this preparation is the responsibility of the management, right? Auditor responsibility is to give a true and fair view of the accounts of the transaction out there, right? Correct? This is a, so stat auditor is concerned with the financial statement reporting, right? So they will do IFCR, whether these transactions which are recorded in the financial statement, balance sheet, PL, cash flow, notes to account, they are properly authorized and recorded properly or not. For example, the transaction is not authorized, but it is reported in the financial statement or balance sheet. That is incorrect, right? Got my point ना? Got my point अर्चना? Got my point? इंटरनेट सही रखे भाई. इंटरनेट खराब होगा तो काम खराब हो जाएगा. प्लीज हैव अ साउंड इंटरनेट कनेक्शन. हॉटस्पॉट, वाईफाई, प्लीज हैव इट. लैपटॉप हैज टू बी गुड. So these things cannot be done. Okay, internet, hotspot, laptop, camera, web camera, this accessory should be there. Blazer, coat, tie. ठीक है, ये सब चीज जरूरी है यार. ठीक है, it should be there. IFCR. What is IFCR testing? Now tell me, Akash Madan, IFCR testing. What is IFCR? What is IFCR?
वीडियो ऑन करिए प्लीज, वीडियो ऑन रखिए सब जन। हाँ, Sir, because I this question, couldn't recollect it. तो हाउ विल कलेक्ट इट? वीडियो ऑफ रहेगा तो कैसे कलेक्ट होगा? आपको कैसे पता चलता है कि वीडियो ऑन रहने से पता चलता है? मेरा वीडियो ऑन ही है, देखिए चेहरा दिख रहा है ना, हम देख सकते हैं आप लोग होती है। हम चेहरा बंद रखते तभी तो है, तो ठीक है। वीडियो ऑन रखिए एवरीवन। हाँ, जो वीडियो ऑफ रखेगा उसको ही सवाल पूछेंगे, वही खाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। इसलिए आईएफसीआर क्या होता है? हु विल टेल आईएफसीआर? आईएफसीआर अभी हमने डिस्कस किया। आईएफसीआर क्या है? रूपाली बताइए। रूपाली इज वेरी सिंसियर स्टूडेंट, बताइए आईएफसीआर। नहीं सर, मेरे को नहीं समझा। आप सिंसियर नहीं है इसका मतलब। आईएफसीआर कौन बताएगा? आईएफसीआर सैयद, आईएफसीआर सैयद, तो एक भी सर ये टेल आईएफसीआर। हाँ, व्हाट इज आईएफसीआर? Sir, IFR is a process designed to increase the reliability of preparation of financial statements to a reasonable level. व्हाट इज आईएफसीआर? Internal controls over financial reporting. विदिता ऑन रखिए वीडियो को, और ओप्पो A3 मत लिखिएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर में बहुत लोग है ना शेयर कर देते हैं लिंक पब्लिक डोमेन में, बहुत होता है होशियार। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर नेम ऑलवेज। आईएफसीआर क्या होता है? व्हाट इज आईएफसीआर? अभी आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड आईएफसीआर, स्मृति विल टेल आईएफसीआर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So आईएफसीआर IFCR is internal financial control over financial reporting. It is to ensure that whether the information provided in the financial statement are accurate or not. ओके, From the balance sheet, P&L, whatever the information that is over there is reliable, accurate or not. गुड। बंसी का आईएफसीआर, आईसीएफआर, आईएफसीआर एक ही होता है दोनों, ठीक है। क्या होता है आईसीएफआर? आईएफसीआर इज सेम। व्हाट इज दिस? Internal control over the financial reporting so that we can check we can ensure the accuracy of the financial statements. All the financial transactions are accurately recorded and plus assets are safeguarded. Transactions are properly authorized also. Transactions are authorized, properly authorized. Authorized and transactions are recorded. properly authorized also, no? No, so that no unauthorized Okay, sir. transactions are reported in the financial statement. ठीक है? ठीक है सर। विदिता, विदिता सर वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिएगा प्लीज, ठीक है। आपका कौन सा कंपनी आया है अभी तक? MSKA एंड एसोसिएट, सुरेश सुराना, PWC, SDC और ICICI बैंक। सुरेश सुराना, ओके। और MSKA हाँ, और PWC। बैंक हो गया आपका पढ़ाई? सर मैं अब स्टार्ट करूंगी कल से। कल से स्टार्ट करेंगे? आज से क्यों नहीं करेंगे? कल कल करते काल आ जाता है ना, आज से शुरू करें सब चीज, ठीक है। जी सर। डेट कब है आपका? सर PWC का 21 अगस्त का है। बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम है, 7 दिन। नहीं सर। और आप तो ऑफिस भी जाता है ना, और आपको 10 लाख रुपए देता है ऑफिस वाला। कितना रुपए देता है ऑफिस? ऑफिस कितना बजे से कितना बजे तक रहता है ऑफिस? सर 11 to 6। कितना? 11 to 6। 11 to 6 ऑफिस जाएंगे, और एचडीसी आपको 21 तारीख को क्लियर करेगा। कुछ चमत्कार होगा पर जाके, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ऑफिस से क्या लेना पड़ेगा? छुट्टी लेना पड़ेगा ना। पेट खराब करिए, कुछ तो खराब करिए ना, दिमाग खराब करिए, कुछ ना कुछ खराब करना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा। तो ये 21 तारीख में आपको पता है आपके पास जो आया है ना, उसके लिए आदमी रो रहा है। अभी आ रहा नहीं है यहाँ पर में, आदमी 2-2 3-3 अटेम्प्ट वाला बैठा है यहाँ पर में। आपका कितना अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट 3 कितना? अटेम्प्ट है। 3 ही है आपका भी। 3। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है एसडीसी में, समझ रहे ना। तो ये इंटरव्यू क्लियर करना जरूरी है। तो आपको अभी 2-3 जो एक हफ्ता है ना, ये एक हफ्ता ऑफिस मत चल जाएगा। दिस 1 वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे ना, क्योंकि ऐसे टाइम पास करके फायदा नहीं है। ऑफिस में रह जाएगी फिर भाई, फायदा नहीं है। 30-40 हजार भाई वही मिलेगा फिर। आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक दिस थिंग्स। कल से ऑफिस का छुट्टी लीजिए। 7 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। ओके। ऑफिस वाला फिर कोई काम नहीं आने वाला है, और ऑफिस वाला आपको ऐसे तंग करते रहेगा, ठीक है। तो ये वाला, ये आपका 21 तारीख को एसडीसी है, और उसके बाद कौन सा है?
उसके हाँ, तो फिर 23 का ICICI बैंक है। और जब हम बात कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करिए आप, ये चीज सीखिए। वहां पर वीडियो ऑन नहीं होगा आपको निकाल देगा सीधे ही। आपको मैं सीधा लिख के दे रहा हूँ, वीडियो ऑन नहीं हुआ आपका रिजेक्ट है। वहां पर मैं आपका वीडियो भूल से भी एक बार भी ऑफ हो गया ना, लिख लीजिएगा, आपको वहां पर सिलेक्ट कर लिया तो हम नाम चेंज कर लेंगे। वीडियो ऑफ मतलब रिजेक्ट, वीडियो आपका मतलब चीटिंग कर रहा है आप एग्जाम में। ओके सर। ओके नहीं है, मजाक मजाक नहीं कर रहे हो, पर वीडियो ऑफ होते ही निकाल देगा वो लोग सीधे ही, मतलब चीटिंग करने लग गई वो। सर बट अभी आई कांट वीडियो ऑन, तो फिर फ्रॉम टुमारो हाँ आई ऑन माय हाँ, वीडियो। वीडियो ऑन रखिए, बिकॉज यहाँ पर मैं क्या है, वहां पर भी वीडियो ऑफ करके आएंगे। इफ यू ऑफ योर वीडियो देयर, दे विल रिजेक्ट यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द सेशन। अगर आपने एक समय भी अगर वीडियो को ऑफ कर दिया तो आपका चला गया वहां पर ऑफर लेटर, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज वहां पर उनको सब हो जाएगा कि आप चीटिंग करके आंसर दे रहे हैं। हम्म। आप ये पीडीएफ खोल के बैठ लिया, आंसर दे रहा है वहां से निकाल निकाल के, और अब तो सोच सोच के आंसर देगा ही। तो कैसे विश्वास करेगा आप आंसर देख के दे रहे कि नहीं देख के दे रहे? और वो आपका चेहरा देख के तो आपको काम में रखेगा ना, कोई भी आदमी तो काम में रखेगा तो पूरा देखेगा ना इंसान को, तभी तो आप में रखेगा। चलिए आपका आंसर देने से थोड़ी ना वो रख लेगा। तो वीडियो ऑन रहना पड़ेगा आप लोग का एनी टाइम। अगर कैमरा खराब है, ओके। हॉटस्पॉट खराब है, इंटरनेट खराब है, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, ठीक है। तो आप कल से ना ये एक्सेल सीट खत्म करेगा, जो हम एक्सेल सीट दिए है ना। और आपका 21 तारीख का जी सर। इंटरव्यू, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू कब है आपका? 23। क्या है उसमें 23 को? बैंक का, ICICI बैंक। बैंक का पीडीएफ खत्म हो गया आपका 5 पेज का? सर मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया था, मैंने अभी ओपन किया था तो हाफ हो गया, हाफ मैं अभी रीड कर रही हूँ। हाँ, वो उसको पहले खत्म करिए। उसके 23 तारीख का कब है नेक्स्ट? 25। क्या है उसमें? उसमें बहुत MSKA सुरना। वो दोनों एक ही है, तो ये एक्सेल सीट से आपका हो जाएगा। सुराना आपका RSM है, ठीक है। तो आप भी सुराना ही है ठीक है। को आप ये एक्सेल सीट खत्म करिए, वो मेन है, ठीक है। पहले बैंक खत्म करके हमको कल हमको वीडियो देंगे, ठीक है। और कल से हमको ऑन चाहिए वीडियो, नहीं तो हमको पसंद नहीं है, ठीक है। और ओप्पो ओप्पो नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ओके। किसको पकड़ के रखे थे? वंशिका को ना, ठीक है। अंशिका, आप बताइए हमको, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? So that we don't breach the overall materiality level. It is the haircut of the overall materiality, and it is around 50 to 75% of the overall materiality. व्हाट आर द 3 levels of materiality? Overall materiality, performance materiality, and clearly trivial materiality. Threshold, clearly trivial Threshold. threshold, ठीक है। Threshold. Explain each of them. Overall materiality is the threshold which influences the economic decision of the investors. And performance materiality is 50 to 75% of the overall materiality. It is haircut of the ओवरऑल overall मेटेरियलिटी आप फिर से materiality. बोलो, क्या बोला? व्हाट इज ओवरऑल मेटेरियलिटी? It is a threshold which we calculate, which influences the economic decision of the stakeholders, not investors. ये आंसर नहीं है इसका, ठीक है। ओवरऑल मेटेरियलिटी कौन बताएगा? कौन है यहाँ पर ज्ञानी? ओवरऑल मेटेरियलिटी मुस्कान पढ़ के आया ना पार्ट लेक्चर, बताइए ओवरऑल मेटेरियलिटी। रितिका को पकड़, रितिका, रितिका गुप्ता। सोने से नहीं होगा, सोने से पाप लग जाएगा फिर आप लोगों को। रितिका, कॉल करिए इनको। कहाँ गए आपका दोस्त? दोनों दोस्त, रितिका, मुस्कान, वीडियो ऑन करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन रखिए आप लोग। रितिका को बोलिए, रितिका, मुस्कान, उनको फोन करिए एक बार के लिए, ठीक है। गड़बड़ नहीं करे, हाँ। ठीक है, हम बोला था ओवरऑल मेटेरियलिटी क्या होता है? व्हाट इज ओवरऑल मेटेरियलिटी? हु नोज दिस आंसर? नींद आ गया आपको? नींद आ गया? नींद आ गया सर आपको? मैं रितिका को पूछ रहे, एक बार रुक जाए, आपको देगी मौका। रितिका, यस क्या सर। हुआ? नींद आ गया आपको?
No, sir. नींद तो आ गया तुमको पता, नींद मत करिए ऐसे, ठीक है। अभी नींद करेंगे तो वापस मुश्किल हो जाएगा। टेंशन में नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मेटरलिटी, ठीक है। बताइए आंसर, व्हाट इज ओवरऑल मेटरलिटी? Sir, overall materiality is the amount calculated by the auditor judgment. It is a tolerable level of limit which is set by the auditor so that financial statement are free from material misstatement. Basically, it is calculated on the overall basis. मजा नहीं है, सैयद बोलिए। आप वीडियो तो सही करिए, इंटरनेट खराब हो गया क्या आपका? सर ओवरऑल मेटेरियल, सर मैं हाँ, आपका वीडियो सर क्वालिटी ओवरऑल मेटेरियलिटी इज It depends on एक मिनट रुकेगा, auditor judgment, एक सेकेंड, unusual transaction, risk or material misstatement. एक सेकेंड। हम आवाज आ रहा है Materiality is ना? affecting the ऋतिका planning रुकिए, stage, but it is not used मेरा to आवाज नहीं आ रहा affect है the क्या? financial statement. आवाज नहीं आ रहा Performance है। materiality, which is generally 50 to 75% of overall materiality, are used by the auditor to check whether a particular account is material or not. आपको आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू रितिका? इंटरनेट इनका सही नहीं है, इंटरनेट सही करवाइए इनका, मुस्कान बोल के, ठीक है। इंटरव्यू में मुश्किल करने वाली है। और ये जो बैठ के रखी है, आप तो दो तीन चीजों को समझा दीजिएगा। अभी जैसे बैठी है, ऐसा लग रहा है सो के रखी है, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ पे सही से बैठा है ना, ये सही से नहीं बैठ के रखी, इनका कल चेहरा दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चेहरा आप जैसे बैठ के रखा है ना, वैसे इनका ना बैठने का स्टाइल देखिएगा आप, तो ऐसा लग रहा है कि आराम से बैठ के रखिएगा सोफा में एकदम, और कल चेहरा दिखाई दे रहा है, हम दिखा नहीं सकते हैं, पर वो गंदा लगता है, वो इट्स नॉट लुकिंग गुड, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। अभी आप बैठे हो तो अप्रोप्रिएटली बैठे हो, ठीक है। वो चीज ऐसा लग रहा है बहुत आराम से बैठा है, तो दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज दे आर चेकिंग योर सीटिंग पोस्चर। प्लीज अंडरस्टैंड मी। अभी जैसे रूपाली है, आपको दीवार में एकदम ऐसा लग रहा है। अभी जैसे देखिए, तरुण इज सिटिंग एकदम प्रॉपरली, ठीक है। तरुण इज गुड, राशि इज ऑल्सो गुड, ध्रुव इज ऑल्सो सिटिंग प्रॉपरली, वंशिका इज ऑल्सो प्रॉपर सिटिंग, आकाश कैन कम फ्रॉम लैपटॉप, तो दिस इवन अर्चना इज गुड। शिवम तुम पीछे में क्या लगा के रखेंगे? दिस थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज को भी इम्प्रूव करना है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति इज ऑल्सो गुड, तो सीटिंग पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा वो बताइए, वो गलती कर रही है दो तीन चीज में, वॉलपेपर चेंज कर लेगी, सीखेगा। ओवरऑल मेटरलिटी, सैयद यू टेल मी अब। सैयद ओवरऑल मेटरलिटी, कोई भी आंसर सही तो दे रहा ही सर नहीं है। ओवरऑल मेटेरियलिटी, हाँ बोलो बोलो बोलो। sir may I tell? हाँ Sir, overall materiality is as per auditor's judgment. It's a level on overall financial statements below which the errors won't affect the user's understanding. what is overall materiality? Again repeat. Sir, overall materiality is the level of materiality where the misstatements exceeding the materiality level will affect the user's understanding of the financial statements. पता नहीं कहाँ से आप लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब हम यहाँ पर में दिखा देते हैं, ठीक है। रुकिए, क्या हुआ शिवांग अग्रवाल, बोलिए, ठीक है। ओवरऑल मेटरलिटी पे कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज ओवरऑल, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन एवरीवन? ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन ना? ठीक है, ठीक है। व्हाई डू वी कैलकुलेट मेटेरियलिटी? ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट वी कैलकुलेट मेटेरियलिटी। ना ओवरऑल मेटेरियलिटी इज प्लानिंग मेटेरियलिटी, इट इज बेस्ड ऑन द बेंचमार्क, तो वी दिस इज कैलकुलेटेड एट द प्लानिंग स्टेज and it is based on the benchmark. The benchmark can be anything, it can depend on the nature of business, risks of material missed, past annual transaction. Benchmark and net turnover, net profit, total assets. If it is a total revenue, then we will take 2 to 5% of total revenue. If it is a net profit, then we take 5 to 10% of the net profit. Overall maturity stage at the planning stage of audit procedure. So overall is overall. It is based on the benchmark, and that benchmark can be turnover, net profit, or total assets. If it is turnover, then 2 to 5%. Profit 5 to 10%. ऐसे करके बोलना पड़ेगा भैया. This is to be told. ठीक है? तो overall maturity is planning stage में होता है, and it's based on the benchmark, and benchmark can depend on the nature of business, this and this and this and this. Okay. For example, I give you. If it is a Paytm,
Paytm business. What should be the benchmark in Paytm? Tell me. What should be the benchmark in Paytm business? Revenue. Revenue, because profit is zero, right? If it is Reliance Industries, profit, right? If it is Zomato, again, revenue, gross merchandise value. If it is a startup which will not come into existence also, then you will see the valuation, and some of the other valuations you will check. Cash flows, net cash flows, what are coming in there, right? If it is a banking sector, loans and advances, right? You can write it down also. Banking sector, loans and advances. If it is a mutual fund, then AMC, asset management company. So this is called overall materiality. ठीक है? पढ़े नहीं है भाई. रितिका आई? कहाँ है दोस्त तुम्हारा? रितिका गुप्ता, वीडियो ऑन रखिए आप, इंटरनेट सही करिए. अब हमको बताइए ओवरऑल मेटेरियलिटी सबको समझ में आ गया? अब हम बताए, अब हम सवाल पूछे. ओवरऑल मेटेरियलिटी शिवम अग्रवाल बोलिए. रितिका वीडियो ऑन रखिए. These questions will be asked in interview and you will say all wrong answer, then gone. Shivam Agarwal, overall materiality. नेटवर्क इशू आ रहा है. Overall materiality is based on benchmark. Benchmark can be turnover, net profit, and total assets. If it's overall materiality is set at a planning stage of audit procedure. Very good, very good, very good. Good. Smriti, आप सही करिए. रितिका, आप अपना सीटिंग अरेंजमेंट और इम्प्रूव करेंगे. आप है ना, अभी आपको खुद देखिए, अब सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं करके रखा है. स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपको. सीटिंग अरेंजमेंट सही करिए, मतलब होता है ना, आप आराम से बैठे, लैपटॉप में बैठा है ना. लैपटॉप ही तो है. लैपटॉप आपका टेबल नहीं है क्या आपके पास? टेबल में रखते हैं ना लैपटॉप, हाथ में रख के रखे क्या लैपटॉप को? बोलिए तो सही. म्यूट में हो आप. यू आर इन म्यूट. सर नेटवर्क इश्यू सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. वो ठीक है, क्रैक हो रहा है, पर सीटिंग अरेंजमेंट तो सही करेंगे ना. सीटिंग अरेंजमेंट इज नॉट राइट. मुस्कान नहीं बताया आपको. देखिए मुस्कान कैसे बैठी है अभी, ठीक है? तो सीटिंग, अभी स्मृति का देखिए पूरा दिख रहा है ना, चेहरा दिख रहा है. आपका देखिए चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका चेहरा ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है. तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट सही करिए. मुस्कान, आप बताया इनको ये चीज? इंटरव्यू में ये सब चीज देखेगा, ये सब चीज समझ में है? थोड़ा सा लैपटॉप को पीछे ले जाइए, लैपटॉप को पीछे ले जाइए. आपको खुद को नहीं दिखाई देता है? खुद को भी तो दिखाई देता है ना जूम में. जैसे राघवेंद्र अभी सही से बैठा है, और राशि ठीक से बैठी है, अर्चना इज सिटिंग वेल. तो सही से बैठना भी जरूरी है, ठीक है? ये सब देखता है लोग, स्मार्ट है कि नहीं है. अब सोचिए आप लोग क्लाइंट के सामने बात करेगा, एकदम लैपटॉप के अंदर ही घुस जाएगा. अच्छा लगेगा भाई? वो क्लाइंट बोलेगा कैसे बात कर रहा है, पार्टनर को सीधा कंप्लेन कर देगा वो. बोलेगा यही ये कैसे बात हो रहा है, ये बात समझिए. तो ये सब चीजें लोग देखता है. इसमें पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया. दिस इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू आर सिटिंग. ठीक है? गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है. व्हाट इज ओवरऑल मेटेरियलिटी? बताइए मुस्कान, आप बताइए ओवरऑल मेटेरियलिटी फटाफट. Sir, overall materiality is also known as performance planning materiality, which is based on the benchmark. Benchmark can be anything: nature of business, risk of material misstatement, or any unusual transactions. गुड, वेरी गुड. इंटरनेट सही रखिए रितिका. वेदांता का इंटरव्यू 20 लाख रुपए देता है. इंटरनेट खराब हो गया तो आपका बहुत रुका होगा. ठीक है? जीडी में हो गया, इंटरनेट खराब तो गया. इंटरनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. क्या व्हाट इज परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? तो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी अगर आप लोगों को पता है तो अगर आंसर ऐसे पूछ ले कि टाइम पास कराने के लिए दिखा दे, आप लोगों को दिखा देता है. प्रोडक्ट तो रखे नहीं है कोई भी, राइट? दिस जनरली 50 to 75%. आप पहले देख लीजिए रितिका, आपको भी दिखा देता है. आपका इंटरनेट इशू है. ओवरऑल मेटेरियलिटी इज बेस्ड ऑन द बेंचमार्क. बेंचमार्क कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, past unusual transaction. Benchmark can be turnover, net profit, total assets, this and this. ठीक है? If it is net profit in this. What is performance? Is generally 50 to 75% of overall materiality. We calculate these to be on safer side so that we do not wait for the overall materiality level to breach in order to inform the management about the uncorrected misstatement. PM is a haircut to the overall materiality. If it uncorrected statement goes above PM, we ask the management to make the rectification uncorrected misstatement. If they do not rectify the uncorrected misstatement, we will issue the qualified opinion. And this is the materiality level. The moment it breaches, the auditor starts performing. ठीक है? समझ में आ गया? हम सवाल पूछे कि एक बार देख लीजिए. Should I ask Syed any doubt in this performance materiality? No doubt na? Today ask. Okay, I will ask you. Huh? Okay, why do we calculate performance materiality, Ritika? So because we calculate performance materiality
so that on the audit report date, we do not harass the client by asking to correct the uncorrected misstatement if it above the overall materiality, so that we auditor will be on the safer side to calculate the performance materiality. If any uncorrected misstatement above the material performance materiality, immediately he will inform the client to rectify all the uncorrected mistakes. And if they do not rectify? And if do not rectify, or whether if it will above the performance materiality, the auditor will qualify the report, or if it below the performance materiality and still the client doesn't rectify, then we will ask the management for the MRL for the same. We'll ask the management MRL for the same. ठीक है, ये आंसर को अच्छा करिए. मुस्कान बताइए. The performance materiality is an overall haircut to the overall materiality. Generally, it is 50 to 75% of the overall materiality. And performance materiality is calculated so that we do not harass the client at the end moment. It is in order to calculate if, for example, if our performance materiality is above the overall materiality, then we'll ask the management to correct the uncorrected misstatement. If they agree with the corrections, then it is okay to proceed. But if they do not agree, then we'll qualify the report. And in case the performance materiality is below the overall materiality, then we'll ask the management again to correct the misstatement. If they agree, then it is okay to proceed. If they do not agree, then we'll ask for the management representation letter. Very good communication skill. Akash, what is overall materiality? What is performance materiality? Okay, sir. Overall materiality is also known as planning materiality. Overall materiality is a materiality level that is determined by the auditor using professional judgment. And it is always based on a benchmark. It is always calculated as a percentage of benchmark. The benchmark can be revenue, net profit, or any other standard benchmarks depending on the industry. And if it's revenue, then? If it is revenue, then? We can take 2 to 5% of the revenue as materiality, Right. overall materiality. If it is net profit, we can take 5 to 10% of net profit as materiality. Okay. Performance materiality? Performance materiality is generally taken as 50 to 75% of overall materiality. And if why do we calculate it? It's a haircut to the overall materiality. It is haircut to the overall materiality. See, my objective okay, sir, I need the to, level of, see, the thing is that I know the level of everyone. If you study in home, then again I have to make it. ठीक है, तो हम अभी करवा देगा तो आपको पता है हो जाएगा. खुद से होने वाला नहीं है. समझेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा समझ ले तो फायदा नहीं है. Something you understand which is not there, so it will be wrong. It's a haircut to the overall okay, materiality. sir, I need to refer it one No more. problem. No problem. 50 to 75% overall materiality, haircut to overall materiality. इतना याद हो गया? Haircut to the overall materiality. Now, why do we calculate performance materiality? Why do we calculate performance materiality? Because we don't want to wait for the overall materiality level to breach. We don't want the overall materiality level to breach. That's why we are calculating this. See, for example, a turnover is 100 crore. So your overall materiality will be how much? If we are taking turnover 5 crore, let's say example 5 crore, correct? Okay, Giving an example, yes, 100 crore turnover, 5 crore. Performance materiality, let's say 2 crore, 50%, safer side 2.5 crore. Got it? So okay, overall 5 crore and a performance materiality 2.5 crore. Audit report date, let's suppose today is only the audit report date. Okay, today is the audit report date. Okay, today is 15 August. okay, Okay, 15 August, good. Independence Day, happy Independence Day. Okay, so yesterday it is 14 August. So by 14 August, the material misstatement, uncorrected misstatement was around 4.5 crore. Okay, today's audit report date. Today's audit report date, yesterday it was 4.5 crore. And let's suppose there is no performance materiality. There is no performance materiality, there is just this only. So your auditor 4.5 crore to below overall materiality, no action.
On the audit report date, suddenly some mistakes were there, and now the mistakes is 7 crore. Now you told, now you go to the client and say, no, you have there is a mistake we have found out, and it is over above our overall materiality. Okay, the client will become harassed. If you tell them to make the changes in the last date, or he will say, like you are saying us at the last moment, and how can we change in that? Okay, like this. And that is why we keep performance materiality, so that we don't have to harass the client on the last date based on the overall materiality. Now you have interview, for example, on 19th August on Deloitte, right? Today only you're telling me, na? If you tell me, sir, my interview is tomorrow, please help me, please help me. Can I help you? No, I cannot help you. I cannot help you. Overall materiality, like this. So we keep a benchmark. We keep a benchmark. Benchmark is a buffer side. Just 4 to 5 days before, people can tell me. Before the interview, just come me, I cannot help. I cannot help. You did not attend my session also. How can I help you? I'm not Superman to help you out, right? So that is the thing. In this also, in the client data also, in the case of client also, so we will not wait for the overall materiality level to breach. So, for example, if it is crossing a 2.5 crore, the moment it crosses 2.5 crore as a material misstatement, total material misstatement, you will tell to the client to make the changes. If they do not make the changes, then what will we do? If they don't make the changes, what will you do? Auditor क्या करेगा? Auditor what will you do? Qualify कर देगा. If your misstatement, the total misstatement crosses performance materiality 2.5 crore, what will you tell to the auditor? You will tell to the client, please make the changes. If they do not make the changes, they do not correct the uncorrected misstatement, what will you do? Qualify, right? Qualified opinion means what? Qualified means what? What do you mean by qualified? Qualified का क्या मतलब होता है? There are 3 types of opinion, na? Qualified, adverse opinion, disclaimer of opinion, right? 3 types of opinion. So you will decide between qualified, adverse, or disclaimer. This is the process. And if it is below PM, if it is below performance materiality, then what will you do? We will not qualify. We'll ask them to change. If they do not change, we will issue a MRL. Management representation. Easy, na? Okay. Now it is easy. You'll be able to say, come into the same link once again, everyone. Okay. So that I think I've explained you both nicely, na? Come into the same link once again, huh? चलिए आ जाइए सेम लिंक में. हाँ, कम इनटू द सेम लिंक. जल्दी आइएगा सब.